A very good morning to all of you. How are you, students? I just hope you all are happy and healthy. Let's continue chapter 6, Attitude and Social Cognition, in which we had already covered the concept of attitude, the component of attitude, features of attitude, the concept of attitude formation, the factors affecting attitude formation, attitude change, the factors affecting attitude change, the three important theory which explain the attitude change process, the balance theory, the cognitive dissonance theory, and the two-step theory. Okay, and in just previous video we had just started the topic prejudice and discrimination, and we already understand the concept of prejudice and the handling strategy, how we control or how we handle the prejudice. Okay, so we already covered that part, and we are continuing the schemas and the stereotype, which is the next topic in the under social cognition. ठीक है, social cognition के concept के अंदर हम stereotype और schemas का concept understand कर रहे थे. So our major topic is the social cognition. Basically, schemas and stereotype. As I already told you, a schema is defined as a mental structure or the mental unit, the smallest unit which explain our thought. ठीक है, जो हमें एक बेस देती है, एक बेस लाइन देती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देती है. दिस इज द schemas. And when we are talking about the social context, so this is the social schemas. So a schema is defined as a mental structure that provides a framework, set of rules or guideline for processing information about any object. Okay. And in just previous video we are discussing about the two important topic, the prototype and the stereotype. Okay. Prototype and stereotypes. So prototype, that means a kind of schemas जो बेसिकली हमारे कैटेगरी और क्लासेस के बेसिस पे होता है. ठीक है, कैटेगरी बेस्ड स्कीमास जो होते हैं उन्हें हम प्रोटोटाइप कहते हैं. एंड स्टीरियोटाइप इज अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है, स्टीरियोटाइप जो है वो प्रोटोटाइप टाइप का स्कीमा है. So most of the schemas are in the form of category or classes, and schemas that function in the form of categories are called prototype. And in social cognition, category based schemas that are related to groups or peoples are called stereotype. जब हम social cognition की बात कर रहे हैं, so in the social cognition section, the category types schemas are basically known as stereotypes. These are category based schemas that are overgeneralized, are not directly verified, and do not allow for exceptions. For example, suppose you have to define a group G, and if you have never directly known or interact with a member of this group, you will most likely use your general knowledge. ठीक है, सपोज आप कोई ग्रुप जी के बारे में कोई एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हो आप, एंड यू नेवर इंटरैक्ट विद द पीपल्स ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप जी. ठीक है, उस ग्रुप के मेंबर के साथ आपका कभी कोई डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ है, सो डेफिनेटली यू यूज योर जनरल नॉलेज. Directly verified, do not allow for exception. Okay, about the typical member of group G, to that information you will add your likes and dislikes. So if you have heard more positive things about group G, then your social schemas about the whole group will be more positive than negative. And on the other hand, when you heard some negative things about the group G, so your social schemas will be in the form of a negative stereotype. Okay? And the influences you have drawn are not the result of your logical thinking or direct experience, but are based on preconceived ideas about a particular group.
ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो आप इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हो उसकी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि किसी ग्रुप जी का मेंबर है उसके बारे में जो आप एक आइडिया लगा रहे हो उसकी पर्सनैलिटी उसके बिहेवियर के बारे में, वो आप किसी लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे नहीं लगा रहे हो, ठीक है, और कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपका ऐसा नहीं हुआ है, बट आप किस चीज के बेसिस पे उसको आइडिया दे रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोटाइप विच इज द प्री-कंसीव्ड आइडियाज अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, pre-occupied ideas हैं. So the next time you actually meet a member of group G, your impression of this person and your behavior towards her or him will be influenced by your stereotype. So it was mentioned earlier that stereotypes provide fertile ground for the growth of prejudice. ठीक है, क्योंकि ये cognitive component है prejudice का, so definitely it provides a ground for developing a prejudice. So and biases against specific groups, but prejudice can also develop without a stereotype. That means जो prejudice होता है वो without a stereotype भी exist करता है. ये possible है कि ये दोनों separately isolated form में develop हो. Now the next topic is impression formation and explaining behavior of others through attribution. That means the impression formation and the attribution in the context of social cognition. ठीक है, हमने social cognition का जो broader topic start किया है उसके अंदर पहले हमने schemas और stereotype पढ़ा. schemas that means the basic unit जो एक हमें framework, एक set of rules बताती है किसी individual के बारे में हमें कैसा behave करना है, ठीक है, ये उसके interaction के पहले की चीजें हैं. मतलब आप अगर किसी ग्रुप या उस ग्रुप के किसी मेंबर से मिल रहे हो तो उसके जो पहले की चीज होती है, प्री ऑक्यूपाइड हमारा जो ब्रेन रहता है जिन थॉट से, कुछ जो सुनी सुनाई बातें रहती हैं, ठीक है, हमने कुछ निगेटिव थॉट सुना है तो निगेटिविटी रहती है, थोड़ा सा इंप्रेशन हमारा, और अगर पॉजिटिव सुना है तो पॉजिटिव होता है. दीज आर द स्कीमास एंड द स्टीरियोटाइप. नाउ जब हम मिलते हैं किसी इंडिविजुअल से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर से जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं इन द सोशल कॉग्निशन दैट आर द इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन. दीज टू कॉन्सेप्ट्स we had already covered, ठीक है, in brief, ठीक है, हमने शॉर्ट में ब्रीफ में अंडरस्टैंड किया हुआ है कि व्हाट इज इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन. एंड मैं रेगुलरली ऑनलाइन क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट रेगुलरली आप लोगों से पूछ रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो. नाउ इन दिस सेक्शन, इन दिस टॉपिक वी एक्सप्लेन दीज टू टॉपिक्स इन डिटेल एंड रिलेटेड फैक्टर्स. ठीक है, जैसे इंप्रेशन फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, हाउ वी फॉर्म आवर इंप्रेशन अबाउट अ पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पीपल, एंड हाउ वी गिव द एट्रीब्यूशन. ठीक है, हाउ वी डिसाइड कि कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमिनाज हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम डिटेल में करेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन. Every social interactions begin with the formation of an impression about the person or the persons. ठीक है, जब भी हम कोई सोशल रिलेशन या सोशल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं तो कोई भी सोशल इंटरेक्शन किस चीज से स्टार्ट होता है, किसी इंडिविजुअल के बारे में किसी तरह का इंप्रेशन फॉर्म करने से. ठीक है, सो public figure and the applicants appearing for job interview are good example that show it is very important to make a good impression on others. So the process of coming to know a person can be broadly divided into two parts, impression formation and attribution. ठीक है, जब भी सोशल कॉग्निशन में जब हमारा सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है सो डेफिनेटली वहां पे किसी इंडिविजुअल के बारे में इंप्रेशन फॉर्म करना और एट्रीब्यूशन, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड द इंटरव्यू सेटिंग एंड द यू कैन से, अगर आप बात करो कि किसी जॉब की या किसी पब्लिक फिगर की अगर आप बात करो, सो डेफिनेटली इस कॉन्टेक्स्ट में इस एग्जांपल के थ्रू आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन. ठीक है, उस पर्सन की फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में उससे किस तरह का बिहेवियर रहेगा, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा गुड इंप्रेशन फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ
The person who formed the impression is called the perceiver. ठीक है, जो impression form कर रहा है, the person जो किसी next other individual के बारे में impression form कर रहा है, who is known as perceiver, वो perceiver है. And the individual about whom the impression is formed is called the target. ठीक है, जिसके बारे में impression form किया जा रहा है, who is a मतलब वो जो person है वो क्या है, target है. So the perceiver gather information or responds to a given information about the qualities of the target and organizes this information and draw inferences about the target. ठीक है, मतलब जो परसीवर रहता है वो गैदर करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. दे इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, दे असेस द इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दे ड्रॉ inferences about a person, about the target. ठीक है. So in attribution, the perceiver goes further and explains why the target behave in a particular way. Attaching or assigning a cause for the target's behavior is the main idea in attributions. So often perceivers may form only an impression about the target, but if the situation required it, they may also make attribution to the target. ठीक है, so attribution क्या है? That's mean why the person is behave in a certain manner. ठीक है, कोई individual that's mean the target अगर वो किसी तरह का behavior कर रहा है, so why they do this type of behavior in this situation. So definitely उसके बारे में जो हम inferences draw कर रहा है, जो perceiver infer कर रहा है, this is the attribution. ठीक है, जहाँ पे हम causation दे रहे हैं किसी particular behavior के बारे में, target के behavior के बारे में. ठीक है, and often perceivers may form only an impression about the target, but in the if the situation required it, they may also make attribution to the target. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार टारगेट के लिए एट्रीब्यूशन और इंप्रेशन फॉर्मेशन दोनों, बट इंप्रेशन फॉर्मेशन इज फर्स्ट, वो जरूर होता है. उसके बाद में भी अगर सिचुएशन रिक्वायर्ड करती है, सिचुएशन की नीड होती है, तो हम वहाँ पे एट्रीब्यूशन भी करते हैं. अदरवाइज सिर्फ इंप्रेशन फॉर्मेशन होता है. The first step is impression formation, then we move on to the attribution. Impression formation and attribution are influenced by the nature of information available to the perceiver, social schemas in the perceiver, and personality characteristic of the perceiver and situational factors. These 4 factors play a vital role in developing impression formation and the attribution. ठीक है, कौन कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं? Impression formation and attribution are influenced by, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्फ्लुएंस प्ले करते हैं? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर. परसीवर के बाद जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज सोशल स्कीमास इन द परसीवर्स. ठीक है, जो परसीवर है उसका सोशल स्कीमास, दैट मींस स्टीरियोटाइप किस टाइप का है. Next is personality characteristic of the perceiver. Personality characteristics of the perceiver.
इन द लास्ट इज सिचुएशनल फैक्टर्स. बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. Situational factors. So ये 4 factors हो सकते हैं. I think the marker is not visible. I have to change the marker. So these are the 4 factors: the social schemas, availability of the information, personality characteristic, and the situational factors. ये 4 factors role play करते हैं हमारे attribution और impression formation में. Now move to the impression formation. So the following aspects have been found in impression formation. मतलब क्या क्या प्रोसेस हो सकता है. बेसिकली द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंप्रेशन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. देन इन सेकेंड सेक्शन व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन कौन से फिनोमिना ऐड हो सकते हैं इसमें. सो द प्रोसेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 सब प्रोसेसेस. फर्स्ट इज सिलेक्शन. We take into account only some bits of information about the target person. मतलब हमारे पास हो सकता है कि उस ग्रुप ऑफ पीपल और किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, एंड वी पिकअप. ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं. हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर्सन के बारे में या उस ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में, बट स्टिल हम वहां पे जो सेलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हम अपनी रेलिवेंट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन इज द सिलेक्शन. Process. Okay. Process of impression formation. First is selection, जहां पे हम ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन में से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन. So the selected information is combined in a systematic way. जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेलेक्ट की है वो कंबाइंड हो रही है एक मतलब प्रॉपर वे में, उसे ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं इन द मेंटल लेवल. हमारे कॉग्निशन में ये सारा प्रोसेस हो रहा है. थर्ड इज इन्फ्रेंसेस. थर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेप में हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं. वी ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द टारगेट इज. ठीक है, जो टारगेट है वो किस तरह का पर्सन है, इसके बारे में हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग. नाउ सम स्पेसिफिक क्वालिटीज इन्फ्लुएंस इंप्रेशन फॉर्मेशन मोर देन अदर ट्रेट्स टू. ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है जो इसमें रोल प्ले करती है और बाकी अदर फैक्टर्स को वो सप्रेस कर देती है और कुछ हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन को ही वो लेती है. सो दीज वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. सो इसमें जैसे कि प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट और हैलो इफेक्ट, ये 3 टाइप ऑफ इफेक्ट हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं. कहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, सिलेक्शन में, इन द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का हमारा सिलेक्शन हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन में भी तो नहीं रोल प्ले करेंगे, या फिर इन्फ्लुएंसेस में रोल प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. द प्राइमेसी इफेक्ट, ठीक है, देन रिसेंसी इफेक्ट, एंड द हेलो इफेक्ट. ठीक है, the order or sequence in which information is presented affect the kind of impression formed. So mostly the information presented first
has a stronger effect than the information presented at the end. So this is called the primacy effect. ठीक है, प्राइमेसी इफेक्ट क्या है? जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, एक बहुत जनरल फ्रेज है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ठीक है, सपोज करो एक इंटरव्यू सेटिंग है और एक कैंडिडेट आता है इंटरव्यू में अपियर होने के लिए, और उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, मतलब वो कब इंटरव्यू हॉल में एंटर कर रहा है और मतलब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी ग्रीटिंग्स कर रहा है, उसके बाद मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो किस तरह से कर रहा है. सो एक उसी से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फीचर्स, उसके जो हाव भाव होते हैं, गेस्चर, पोस्चर्स, उसकी लैंग्वेज, उसका प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाती है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट आंसर के बेसिस पे बहुत सारी चीजें को जज कर लिया जाता है, बहुत सारी इवेल्युएशन हो जाता है. सो दिस इफेक्ट इज बेसिकली नोन एज प्राइमेसी इफेक्ट. ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, उसके बाद उसने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर खराब दे दिए या नहीं अप्रोप्रिएट दिए. ठीक है, सो बट वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जितना फर्स्ट क्वेश्चन का करेगा. ठीक है, सो दैट्स मीन जो फर्स्ट इंप्रेशन किसी इंडिविजुअल के बारे में बनता है, जब हम फर्स्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो पहली इंफॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में हमें मिल रही है, अगर वो इफेक्टिव है तो हम उसे एज अ पॉजिटिव वे में लेते हैं और इफेक्टिव पर्सन के कैटेगरी में उसे क्लासिफाइड कर देते हैं और उसे एक अच्छा पर्सन समझने लगते हैं. जबकि जो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव है, तो हम बाकी सारी चीजों को भी निगेटिव वे में परसीव करते हैं. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज प्राइमेसी इफेक्ट, जहां पे पहला इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इंप्रेशन आर दी lasting impression. So however, if the perceiver may be asked to pay attention to all the information and not merely to the first information, so whatever information comes at the end maybe have a stronger influence. This is known as the recency effect. ठीक है, as like the primacy effect, जिस तरह से primacy effect में first information is so much influencing, as it is in recency effect the last information is very important. ठीक है, मे बी अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्राइमेसी इफेक्ट के बेसिस पे इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, सो जो लास्ट जो कि उस पर्सन से जब हम गुड बाय कह रहे हैं, जब हम उससे जो कि हमारा जो रिलेशन है वहां पे क्लोज करके हम उसे मूव ऑन कर रहे हैं, सो उस टाइम पे उसका जो इंप्रेशन बन रहा है, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो वो भी जो हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा देर तक परसिस्ट करती है एक्चुअली. सो दिस फैक्टर इज बेसिकली नोन एज recency effect, the last information. ठीक है, so whatever information comes at the end may have a stronger influence. जो भी information last में आ रही है वो भी एक stronger influence create करती है. This is known as recency effect. Now the third concept is the halo effect. So we have a tendency to think that a target person who has one set of positive qualities must also be having other specific positive qualities that are associated with the first set, and this is known as the halo effect. ठीक है, halo effect that mean हमने अगर assume किया, हम ग्रुप्स में, कैटेगरीज में और टाइप्स में चीजों को परसीव करते हैं. अगर हमने एक क्वालिटी किसी ग्रुप ऑफ क्वालिटीज में से अगर एक क्वालिटी हमने देखा कि उस पर्सन में है, उस इंडिविजुअल में है, और हमने वो परसीव किया, सो डेफिनेटली हमारा जो आगे का परसेप्शन होगा, उस जो इंप्रेशन होगा, वो उससे इन्फ्लुएंस होगा और हम अज्यूम कर लेंगे कि उस ग्रुप की जो अदर क्वालिटीज है वो भी उस इंडिविजुअल में अवेलेबल होगी, उस इंडिविजुअल में वो सारी क्वालिटीज भी होगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज हेलो इफेक्ट. ठीक है, सी जहां पे क्या होता है, वी हैव अ टेंडेंसी टू थिंक दैट अ टारगेट पर्सन हु हैज वन सेट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज मस्ट ऑल्सो बी हैविंग अदर स्पेसिफिक पॉजिटिव क्वालिटी. अगर एक दो अच्छी क्वालिटीज है, सो डेफिनेटली हम अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी और उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज होगी वो उसमें होगी. फॉर एग्जाम्पल, if we are told that a person is tidy and punctual, so we are likely to think that this person must also be hard working or organized. ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर हमने देखा कि जो पर्सन है वो टाइडी है, पंक्चुअल है, सो डेफिनेटली हम अज्यूम करेंगे कि वो हार्ड वर्किंग भी होगा, ऑर्गेनाइज भी होगा. ठीक है, एट द सेम टाइम और सारी भी जो उससे रिलेटेड क्वालिटीज है वो भी उसमें होंगी. तो हम एक दो क्वालिटीज के बेसिस पे बाकी और सारी उस ग्रुप की क्वालिटीज को अज्यूम कर लेते हैं और फील करते हैं कि वो सारी भी उसमें होंगी. दिस इफेक्ट इज नोन एज
हेलो इफेक्ट, और ये भी हमारे इंप्रेशन फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फाइनली ये जो 3 इफेक्ट्स हैं, द प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट एंड द हेलो इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट एंड द इन 3 प्रोसेसेस में सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें रोल प्ले करते हैं, ओवरऑल हमारे इंप्रेशन को फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज द होल फिनोमेना ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन। फर्स्टली हमने जब अंडरस्टैंड किया था तो हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज इंप्रेशन फॉर्मेशन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द स्टेप, व्हाट आर द प्रोसेस, वो हमने होल अंडरस्टैंड किया कि क्या क्या चीजें इसमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। नाउ मूव टू द एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजेलिटी। So our next topic is attribution of causality. Attribution of So after forming an impression, we often go through the process of assigning causes to a person's behavior. ठीक है, जब हम इंप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में, आफ्टर दैट हम मूव ऑन करते हैं, उसके बिहेवियर को इवेलुएट करते रहते हैं, उससे रिलेटेड कॉजेस हम फाइंड आउट करने लगते हैं कि व्हाई अ पर्सन बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। So this is also a systematic process as indicated by the researchers done on attribution. The following aspects of attributions have been found. ठीक है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं, किस तरह से ये पूरा एस्पेक्ट्स है। So when we assign a cause to a person's behavior, we can broadly classify the causes as being internal, something within the person, or external, that means something outside the person. For example, if we see a person A hitting another person B, so as observer we may explain the hitting behavior by saying that A hit B because A is a hot-tempered person, or which an internal personality characteristic or personality related cause, or that A hit B because B behaved in a nasty way, which is an external situational cause. ठीक है, so सबसे पहला माना जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल। जब हम कैजुअलिटी जब कॉजेशन हम निकालते हैं एट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, या तो हम इंटरनल फैक्टर को इन्फ्लुएंस देंगे, इंटरनल फैक्टर को उसका कॉज बताएंगे, या एक्सटर्नल फैक्टर को उसका कॉज बताएंगे। सो द फर्स्ट इज इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ए पर्सन बी को हिट करता है, सपोज एक पर्सन है जो ए है और वो बी जो पर्सन है उसे हिट कर रहा है, सो या दो इन्फ्लुएंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड एग्रेसिव पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, वो छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो सकता है, हॉस्टाइल बिहेवियर शो कर सकता है, दैट्स व्हाई उसने बी को हिट किया। या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन रिक्वायर्ड दिस बिहेवियर बेसिकली बिकॉज बी बिहेविंग इन अ नॉट एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, जो बी पर्सन है वो एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली डिजर्व कर रहा था वो जो कि एग्रेसिव बिहेवियर, बिकॉज वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा था उस सिचुएशन में। दैट मीन द सिचुएशनल डिमांड थी। इस तरह से ए का जो ये बिहेवियर शो हुआ ये सिचुएशन की डिमांड थी। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? एक्सटर्नल फैक्टर पे। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? व्हेन पीपल मेक attributions for success and failure, the causes they give can be classified into internal or external factor and also into stable or unstable factors. Bernard Wenner suggested a classification which is shown in figure 6.4. Stable factors refers to those causes that do not change with time, while
Unstable factors are those that do change. ठीक है, as the name suggests stable, that means वो factors जो lifelong रहेंगे, stable रहेंगे, consistent रहेंगे, जबकि जो unstable factors है वो change हो सकते हैं according to time period. ठीक है, ये फिगर आपके बुक्स में दिया हुआ है. See the figure. So इसके बेसिस पे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को बताया था बर्नार्ड वेनर ने. बर्नार्ड वेनर ने सजेस्ट किया था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. At the same time, stable and unstable factor. ठीक है. So ये दो causes हो सकते हैं जो हमारे attribution को influence करते हैं. बाकी few other causes हैं जिसे हम next class में explain करेंगे. This is all about today. So today we understand the concept of impression formation. What are the factors? What are the 3 steps of impression formation, and what are the effects? The primacy effect, recency effect, and the halo effect. And we just started the attribution, and the attribution is still continue in the next video. Thank you so much, class.